दोस्तों हम आ गए IMC यानी कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 पर, जहां पर कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड जो हैं वो शोकेस कर रहे हैं अपनी इनोवेशंस को, फ्यूचरिस्टिक टेक को और प्रोडक्ट्स को। और आज मैं आपको एक ऐसे ही इंटरनेशनल ब्रांड से मिलवाने वाला हूं जो कि ग्लोबली न केवल स्मार्टफोन्स को पावर कर रहा है बल्कि काफ़ी कुछ और कर रहा है, जो कि हम जानेंगे डायरेक्टली उनके ऑफिशियल से। मैं बात कर रहा हूँ MediaTek के बारे में, और MediaTek का जो बूथ है दोस्तों वो यहाँ पर है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली वहाँ पर, और सबसे पहले मिलवाऊंगा एक बहुत ही स्पेशल पर्सन से। यू हैव सीन हिम विद मी इन मैनी अदर वीडियोज़, और आप जानते हैं उनको। Hello Anuj. Oh, hi, Shivam, how are you? I'm good. How are you? All good, all good. How is IMC 2023 going on till now? Oh, great, Shivam. I think it's a great experience, Yes. and thank you for joining us today. Yes. बहुत एक्साइटिंग और मज़ेदार चीज़ें चल रही है IMC में। अगर मैं MediaTek की बात करूँ, हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें शोकेस कर रहे हैं आज IMC पे। अगर मैं बात करूँ, आपको हमारा MediaTek का ऑटोमोटिव सोल्यूशन के बारे में पता है ना? हाँ, ये मैंने सुना है काफ़ी कुछ। आप बताइए कि क्या है, न केवल ऑटोमोटिव सेक्शन बल्कि अनुज हमें एक पूरा टूर कराने वाले हैं, क्विक टूर ऑफ द MediaTek। ओह श्योर सर्टनली। तो अगर मैं ऑटोमोटिव की बात करूँ तो हमारा MediaTek Dimensity Auto Cockpit Solution है, विच इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेस्टिंग सोल्यूशन। एक नहीं, दो नहीं, 3 स्क्रीन्स हम पावर करते हैं। 3 भी नहीं बल्कि 5 स्क्रीन्स पावर कर सकते हो टू मेक योर कंप्लीट एक्सपीरियंस एंड ऑसम ड्राइविंग एक्सपीरियंस, राइट। बात में करूँ इंफरटेनमेंट की, बात में करूँ सर्विलेंस की, कैमरास की, इट्स ऑसम एक्सपीरियंस, यू नो। बात में करूँ एंट्री लेवल सेगमेंट कार्स की, मिड सेगमेंट कार की या फ्लैगशिप प्रीमियम कार्स की, सब हमारे पास सॉल्यूशंस हैं विच आर आल्सो पिन टू पिन कंपैटिबल सॉल्यूशन। MediaTek ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन के साथ यू कैन एंजॉय ड्राइविंग। MediaTek हमारी जो कार का एक्सपीरियंस है उसको भी चेंज करने वाला है पूरी तरीके से। आप भूले तो नहीं, वी पावर मोर देन 2 बिलियन डिवाइसेस एवरी ईयर। यस, आई नो। तो अगर मैं ऑटोमोबाइल से आऊँ और मैं बात करूँ हमारे स्मार्ट होम्स पे, आपको पता ही है वी हैव बीन नंबर 1 इन वेरियस कैटेगरीज। इस बार हम ये देखो कितनी मजेदार चीज़ है। यहाँ पे हम लोग एक नया MediaTek बेस पोर्टेबल एंड्रॉइड प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विच आर पावर्ड MediaTek ऑलवेज कीप ह्यूमंस इन माइंड, यू नो दैट, राइट। तो हमेशा कोई भी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, वी ऑलवेज मेक ब्रिलियंट टेक्नोलॉजीज फॉर एवरीडे लाइफ, यू नो। यहाँ से मूव करते हैं IoT। यस, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन IoT, एंड हमारे ऑडियंस भी काफी ज्यादा इसको लेकर। क्या आप इस बॉक्स को जानते हैं? इस बॉक्स को आइए सभी लोग जानते होंगे जब भी कोई पेमेंट करते होंगे UPI के थ्रू। बिल्कुल। सो ये बॉक्स से लेके अगर मैं बात करूँ बहुत स्मार्ट सॉल्यूशंस की, MediaTek के जेन्यू प्लेटफॉर्म जो है हमारा MediaTek जेन्यू प्लेटफॉर्म, अगर मैं बात करूँ तो दिस इज अ वेरी स्मार्ट एंड इनोवेटिव पॉस टर्मिनल। सो इट इज आल्सो पावर्ड बाय MediaTek ओनली। यस, देखिए दोनों तरफ से इंटरेक्शन हो रही है इसके अंदर, राइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ से आ जाते हैं हम स्मार्ट बाइक। ये बाइक का जो स्पेशल सोल्यूशन MediaTek ने बनाया है विच इज़ पावर्ड अगेन बाय MediaTek। हम बात करें सस्टेनेबिलिटी की भी बात करें, अगर कितना इंपॉर्टेंट है EVs के लिए। सो दिस स्क्रीन इज मेड फॉर जस्ट EV एक्सपीरियंस। आपके EV के अंदर बैटरी कितनी बची है, आपको ऑफ कोर्स मैप चाहिए, GPS चाहिए, राइट, वो हो गया, और कितनी सारी इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको इस सॉल्यूशन में। So the readings are going to be more reliable because it is powered by MediaTek now. Oh, yeah, certainly. And of course, pollution free. Right. Yes. अगर मैं यहाँ से चलता हूँ और let's talk about more of our Geno solution, और अगर मैं इनोवेटिव चीज़ों की और बात करूँ तो वाईफाई राउटर्स की बात करूँ, या फिर स्मार्ट वॉचेस भी है, TWS पावर्ड बाय MediaTek अरोहा सॉल्यूशन जो है, जैसे कि मैं बात करूँ TWS डिवाइसेस की बात करूँ, स्मार्ट वॉचेस की बात करूँ। सो ऑल दीज कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस आर पावर्ड बाय MediaTek व्हिच आर अवेलेबल एंड व्हिच वी आर डिस्प्लेइंग। करेक्ट। अब मैं यहाँ से आता हूँ और देखो चलते रहेंगे, हम और चीज़ें देखते हैं कितनी चीज़ें हैं इस बार। बहुत यू नो, ऑफ कोर्स, यू नो, टू ओवरऑल कवर द इकोसिस्टम वी आर आल्सो टॉकिंग एंड कवरिंग आवर फाइलॉजिक सॉल्यूशन, यू नो, व्हिच इज आवर वाईफाई राउटर्स, CPE बेस्ड सॉल्यूशंस, यू नो, फॉर टू मेक योर होम एंटरटेनमेंट सिस्टम रियली इंटरेस्टिंग, यू नो। मे बी यू टॉक अबाउट Wi-Fi 6 और आने वाले टाइम में Wi-Fi 7, बिल्कुल, दैट्स ऑलरेडी अवेलेबल एंड व्हाट मोर। यस, अभी मैं सैटेलाइट को अगर बात करूँ, सैटेलाइट को लेकर बहुत ज़्यादा बज़ है इस पूरे साल में। सब लोग जानना चाहते हैं सैटेलाइट कनेक्टिविटी को लेकर। तो MediaTek का सैटेलाइट कनेक्टिविटी का क्या कंज्यूमर को इफेक्ट करने वाला है, और क्या MediaTek करने वाला है? When it comes to MediaTek, we always take care of futuristic technology, और बहुत फ्यूचर की बात नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ MediaTek का सैटेलाइट बेस्ड सोल्यूशन जो है, which is already ready and available. So MediaTek के कुछ एक ग्लोबली लॉन्च सॉल्यूशंस हैं, MediaTek Defy with Motorola। हाँ, ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपके बताऊं कि अभी आज हाल ही में IMC में कुछ एक ऑपरेटर्स ने अनाउंस किया है कि ये टेक्नोलॉजी भी आने वाली है जल्दी। जैसी आएगी हमारे सॉल्यूशंस ग्लोबली, so MediaTek is ready for that. We work on global standards, NTN and all, so these solutions are ready. So इसके बैक साइड पे हम लोग सॉल्यूशंस दिखा रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं। You want to take a look at that? Yes, for sure. Okay, so here are the devices. देखिए बिल्कुल
these are two devices which are available and powered on MediaTek. It takes care about 5G satellite connectivity with MediaTek whenever it's available. Yeah. Okay. अब मैं यहाँ से चलता हूँ आगे हमारा फेवरेट टॉपिक जो स्मार्टफोन्स. Well, when talked about MediaTek Dimensity 5G experience. So I've seen a variety of smartphones यहाँ पर लगे हुए हैं, टैबलेट हो, फोल्डेबल फोल्डेबल हो, फ्लिप फोन. बिल्कुल. अगर आप बात करें किसी भी सेगमेंट की बात करें, मेन स्ट्रीम सेगमेंट से प्रीमियम सेगमेंट में और फ्लैगशिप में, तो सर्टनली MediaTek के फोन्स, आई एम श्योर आप सारा टाइम पता ही आपको यूज किया है और काफी उसका काफी अच्छा MediaTek Dimensity is empowering the ecosystem for 5G. We have always been ready with it. You know, we talk about new form factors, चाहे fold हो, चाहे flips हो, overall experience है, camera experience हो, gaming experience हो, आपको सारा MediaTek Dimensity में मिलेगा. अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ. अभी बचा है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, MediaTek के जो सॉल्यूशंस हैं, MediaTek के कंप्यूटिंग सॉल्यूशन हैं, वी ऑलवेज कीप एजुकेशन इन माइंड, वी ऑलवेज कीप एंटरटेनमेंट इन माइंड, राइट. इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. तो MediaTek की एक लेटली पावर्ड बाय जियो बुक जो लॉन्च हुआ था, दैट्स अवेलेबल. यू नो, अगर मैं और बात करूँ कि HP सॉल्यूशंस की बात करूँ तो HP Chromebook is also there, right. So I think this is the overall products and technology, phones, smartphones and beyond smartphones, what we are offering and covering today. So in short, MediaTek is everywhere. आप कहीं भी हाथ रखिए, फ़ोन है, टैबलेट है, फ्लिप फ़ोन है, फोल्डेबल फ़ोन है या फिर स्पीकर है. इनफैक्ट आप जिस पर पेमेंट करते हो वो पेटीएम का डिवाइस, वहाँ पर भी MediaTek है. सो काफ़ी कुछ है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं भी. और अब तो आपने सब ये पूरा दिखा दिया है, तो मैं सभी के बारे में डिटेल में जानना चाहूँगा. तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर दिस टूर. अभी हम बात करते हैं दोस्तों पर्टिकुलर सेगमेंट से और चलते हैं MediaTek की बाकी ऑफिशियल्स के पास. तो दोस्तों पूरा बूथ आपने घूम ही लिया है मेरे और अनुज के साथ में. अब डायरेक्टली चलते हैं MD MediaTek इंडिया के साथ में और वहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे इंडिया हेल्प कर रहा है R&D में MediaTek को ग्लोबली और भी काफ़ी कुछ. सो फाइनली दोस्तों हमारे साथ है MD MediaTek इंडिया मिस्टर अंकु जैन. Hello sir, how are you? I'm very good, Shivam. Very excited to be here. How are you feeling at the Indian Mobile Congress 2023? I think ये जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस है, लास्ट ईयर 5G लॉन्च हुआ था, PM मोदी ने लॉन्च किया था. That was very exciting. और इस बार हमने स्पीच सुनी आज सुबह, तो आई थिंक दैट एक्साइटमेंट कंटिन्यूज. और हमारे लिए अगर आप देखें कितना बज़ है हमारे बूथ पे, तो दैट शोज लॉट ऑफ प्रॉमिस एंड सो दैट्स व्हाई वी आर वेरी एक्साइटेड. डायरेक्टली सवालों पे आते हैं जो ऑडियंस ने हमारे लिए हमसे पूछे हैं कि हम MediaTek से पूछे. तो सबसे पहला जो सवाल है सर वो यही है कि हाउ इंडिया इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन R&D टू MediaTek एट ग्लोबल लेवल. ओके, तो एक्चुअली हमारी जो R&D है वो इंडिया में शुरू हुई थी 2004 में, तो लॉन्ग टाइम, 19 साल हो गए, right? And we have two R&D centers. One is in Noida, and second one is in Bangalore. And overall, we have about more than 1,000 engineers, very highly qualified engineers. And these engineers, they are doing both things. One is about software design. So, अगर आप देखें मोबाइल फ़ोन में या फिर दूसरे devices में, there's software like modem software, Android software, and Wi-Fi. ये सब software based होता है, right? So that we have a lot of software talent here. And also we have hardware design talent, right? So we have both software design and hardware design talent. So this is something which is going to grow further. From our HQ point of view, we feel that MediaTek is a very important talent market, talent pool, because of highly qualified engineers available here. So this strength will continue to grow up in the coming years. So we are, I think, and the kind of work we do here, of course, I told about hardware and software design, and we are actually talk about global, right? So we are, we are kind of extension of the global R&D. तो जो ग्लोबली प्रोडक्ट्स हमारे डिज़ाइन होते हैं, लॉन्च होते हैं, उसका हम पार्ट प्ले करते हैं यहाँ पर. तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो दे काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द ग्लोबल R&D. एंड ऑल्सो नाउ एज यू सी इंडिया में मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है. तो हमारे काफ़ी कस्टमर्स हैं जो इंडिया बेस्ड हैं और इंडिया में R&D कर रहे हैं वो भी. तो उसके साथ हमें कॉपरेशन करनी पड़ती है. तो उसके लिए भी हमारा जो जो इंजीनियरिंग पूल है, दे ट्राई टू सपोर्ट देम very closely so that the effect is very efficient. कह सकते हैं कि इंडिया काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल लेवल पर. मीडिया ग्लोबल लेवल पे बहुत कर रहा है और इंडिया बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया वो भी उसमें बहुत कर रहा है. बहुत अच्छा लगा ये सबका जानकर. ऑडियंस भी शायद खुशी होगी हमारी भी जान करके. तो दूसरा सवाल ये है कि टेल अस अबाउट द एडवांसमेंट इन AI नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द कंज्यूमर. वो कंज्यूमर को कैसे अफेक्ट करने वाले, कहाँ इम्प्लीकेशन उसकी होंगी? देखो AI में अभी रिसेंटली आपने सुना होगा जनरेटिव AI इज पिकिंग अप स्पीड अ लॉट, राइट? तो हम लोग जैसे फ़ोन पे यूज़ करते हैं, देयर इज नॉइज़ करेक्शन इन व्हेन यू यूज़ अ कैमरा
या फिर वॉइस, जैसे NLP की बात करी तो देर इज वॉइस रिकग्निशन एंड ऑल दैट, राइट? सो ऑल दैट इज ड्रिवन थ्रू AI. Now generative AI is a new buzzword, right? Which is catching up speed and that is able to create more and more use cases for the end user. तो उसके लिए हमने अभी रिसेंटली क्या किया है कि वी हैव एक्चुअली ट्राई टू ब्रिंग द जनरेटिव AI ऑन द एज इटसेल्फ. तो डिवाइस में ये फैसिलिटी अवेलेबल है. तो वी हैव टाइड अप विद मेटाज लामा टू LLM. वही नेक्स्ट सवाल मेरा वही है. हाँ, तो हमने उसमें वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग एंड डूइंग R&D ऑन द मेटाज लामा 2 LLM. एंड उससे क्या होगा कि जो उसका जो जनरेटिव AI का जो इंजन होगा वो फ़ोन पे ही चल जाएगा. ठीक है, तो उसमें आपको कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है. राइट. एंड दैट हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. करेक्ट. सो सर, इसी मेटा और MediaTek का जो ये कोलैबोरेशन है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बज़ है मार्केट में. काफ़ी लोग हमसे पूछ भी रहे थे, तो अब इसी में डायरेक्टली आ जाते हैं. थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा डिटेल में अगर बता पाए तो, कोलैबोरेशन ऑफ MediaTek एंड मेटा लामा 2. देखिए, जनरेटिव AI का जो होता है कॉन्सेप्ट, या AI का भी मान सकते हैं, उसमें देयर इज लॉट ऑफ कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ट्रेडिशनली क्या हुआ था कि जो कंप्यूटिंग एंड इन्फ्रेंस एक्सेट्रा हैज़ टू बी डन फ्रॉम द क्लाउड. तो उसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए, राइट? बट अभी जो कोलैबोरेशन है उसमें क्या होगा कि जो मेटा का जो लामा तो जनरेटिव जो LLM है, दैट विल बी हाउस्ड ऑन द डिवाइस इटसेल्फ. ओह, नाइस. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो इवन इफ द फोन इज नॉट कनेक्टेड, still you can have AI features. Right. तो उससे एक तो ये है, सेकेंडली इट इज मोर सिक्योर. आपको कम्युनिकेट ही नहीं करना कहीं पे. प्राइवेसी ज़्यादा है. Right. तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. और MediaTek का अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं, फॉर एग्जाम्पल MediaTek का न्यूरो पायलट इंजन है. Right. And it has transformer acceleration etc. So that is also playing cooperating very well with this new concept. तो इसलिए हमें आई थिंक वी विल सी प्रोडक्ट्स पावर्ड बाय दिस कॉन्सेप्ट वेरी सून एंड इट विल बी वेरी एक्साइटिंग फॉर द एंड यूजर. We are also and our audience also looking forward for this. Absolutely. Sir, and thank you for giving us your valuable time and enlightening us and our audience and telling us about the plans of MediaTek and how MediaTek is changing the lives of consumers and the end users. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I hope you guys have remembered कि बार्सिलोना में MediaTek ने अनाउंस किया था कि वो 5G सैटेलाइट कनेक्टिविटी टेक लेकर के आने वाले हैं. यहाँ पर उसको शोकेस भी किया गया है. तो चलिए जानते हैं उन्हीं के ऑफिशियल से. Now we have Mr. Deepak with us from MediaTek. Hello sir, how are you? Hi Shivam, I'm doing very well, thank you. How are you? I'm good too. And how is your experience going on in the IMC 2023? Yeah, it's been great. I mean, today is the first day and you can see every year experiences just going to the next level. Right. And there are a lot of enthusiasts we are seeing who are interested in doing the tech, what's happening around and what MediaTek is doing. Right. So there's a lot of interest actually. Yes, and the footfall is huge this time. Yeah, absolutely. I mean, there's a lot of people who are interested. Right. And we have various solutions that we have put in display. Yes. So coming to the question, sir, in the MWC Barcelona this year, MediaTek has announced its 5G satellite connectivity tech. Right. So can you elaborate to our audience what is this and how is it going to work? So actually, satellite connectivity, if we talk about, it's totally a game changer kind of solution. So if you compare it with your typical cellular network, so that is satellite connectivity is going to complement the cellular network or say the terrestrial network. So basically, satellite connectivity basically addresses the coverage, where the typical cellular network cannot reach, and that is how it enhances the experience of the users basically. So be it in the remotest areas, and you can think of the applications and use cases like emergency services, or low data kind of solutions, voice or SMS solutions, which was not very prominent before, but with satellite connectivity this is going to be possible. Right. Yeah. So people will get the good network coverage in the remote areas as well. The remote, yes, exactly. So thank you sir, thank you so much for joining us and telling us about the use case, the actual use case of this technology and how it is going to be change the life of the people. Thank you Shivam. तो दोस्तों 5G सैटेलाइट टेक तो लॉन्च होने ही वाला है, MediaTek लाने वाला है स्मार्टफोन्स के चिपसेट में, लेकिन अब इंडिया जो है इतना बड़ा मार्केट है 5G के मद्देनज़र, इतने सारे स्मार्टफोन्स यूज़र हैं, तो ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि MediaTek
इंडिया के बारे में क्या सोचता है, क्या उसके प्लान और स्ट्रेटजी है। तो इसके लिए मैं आपको मिलवाने वाला हूँ मिस्टर माइल्स से। Joining us, Mr. Miles from MediaTek. Hello, Miles. Hello. How Nice. are you? I'm very, very good. How is the experience going on at the MediaTek? It's an amazing experience. I think we joined the ceremony in the morning. Your Prime Minister gave a very inspirational speech on the 5G and 6G. We are very, very happy to be here and be part of this journey to have India, to be part of the India's growth for the future. And how is MediaTek is feeling at the Indian Mobile Congress 2023? We have a booth here. We are very happy to be here. It's an amazing experience. We've got to show off all our technology Right. here today. Right. So we are very excited to be part of this IMC. And yes, personally, I'm excited also. Very happy to be here. Yeah. Yeah. As you know that India is a very huge market Yeah. with a lot of potential when it comes to 5G. Yes. And it is also one of the largest market in terms of mobile phone users. Yes. So how is MediaTek seeing India in terms of 5G? Yeah. India is a big market for MediaTek, and we work closely with the operators like Ranjo and Airtel on 5G. So it's a big market for MediaTek, and we have invested huge resources locally to help to the migration from the 4G to 5G. So yeah, it's a big market for MediaTek, and we cannot afford to miss out. Yes. So we are very aggressive here. And our PM today talk about 6G also. Yeah. So is there any plan of MediaTek that is going on for the 6G for Yeah. India or globally? Yes, You want to tell? yes, we already invest on the 6G, but I cannot say too much. Yeah, but rest assured, we are invest on the 6G for the future. Yes, Yeah. definitely. Yes. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Now let's know about my favorite section और वो है ऑटोमोटिव सेक्शन, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ बातें करने के लिए आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं मुझे मिस रीटा, जो कि हमें बताएंगी कि कैसे MediaTek ऑटोमोटिव सेक्टर में एडवांसमेंट कर रहा है और क्या क्या नई चीज़ें लेकर के आ रहा है। We have Miss Rita from MediaTek with us, who is going to tell us about the relationship of MediaTek and the automotive industry. Hello, Miss Rita, Hi. and welcome to India. Hi, nice to see you here. Yes, same here. How is you feeling at the Indian Mobile Congress 2023? Oh, I think the Mobile Congress will be very wonderful and really impressive. Yes, yes. So can you, for those who are unaware, can you tell us about the MediaTek automotive platform? Yeah. Here I want to introduce the MediaTek Dimensity Auto platform. Yeah, this is including the auto cockpit, just like you can see here, and we also have the Wi-Fi, Bluetooth, and telematics. Yeah, all for those integrated as one MediaTek Dimensity Auto. And when we see car today, the car are very much advanced. We have EVs, we have cars with ADAS, we have a lot of tech inside the car. So, and the cockpit is the main thing that enhances the driving experience of anybody who drives the car. So can you please tell us a little bit in detail about the MediaTek Dimensity Auto Cockpit and how MediaTek Dimensity Auto Cockpit is designed to be the world's fastest smart auto cockpit? Yeah, okay, thank you. As you may know that MediaTek has very lots of successful stories in TV, in audio or mobile, all of those fields. So we convert all of those technologies to automotive fields, so that you can see here that this cockpit solution it can supply more than 10 displays. Yeah, and we also have the mirror vision technology for customers easily and widely see the visions that they can see. We committed to the automotive market, and we also want to directly communicate with large OEM and tier ones locally. Yeah, that's all our valuable partners here. Thank you, Rita, for enlightening us and our audience and telling us about the relationship of MediaTek with the automotive industry and how is MediaTek is going to change the automotive industry. So, Yeah. thank you for joining. Yeah, thank you. So guys, MediaTek is not only about smartphones that have traditional form factor, लेकिन चाहे आपका फ्लिप फ़ोन हो, चाहे आपका फोल्डेबल फ़ोन हो, इन सभी में भी जो है आपको MediaTek का चिपसेट मिल जाएगा। और इन सभी फॉर्म फैक्टर के बारे में बात करने के लिए, ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए हमें ज्वाइन अप कर रहे हैं मिस्टर डैनियल। So guys, finally now we have with us Mr. Daniel from MediaTek. Hi Daniel, how are you? Hi, thanks for having me. Yeah. Appreciate it.
So, how are you feeling in the Indian Mobile Congress 2023? How's the experience going on till now? It gets more exciting every year. I was here last year and yeah, I was impressed already. But this year you see a lot of more digitization. Everybody's talking about 5G. They are expecting a lot from 5G. So yeah, it's really exciting for us. Yes. Let's come to the questions now. All right. So, MediaTek is now everywhere these days. Yes. Not only in the standard phones, but whether it's a flip phone, a foldable phone, or a tablet. Okay. So, can you please tell us how MediaTek is powering these different kinds of phones? I think mobile phones always has a very interesting history, right? So first, if you look at the feature phones, Right. you start with a candy bar, then you get a flip, and then you go back to candy bar again, you know, and then you get like a QWERTY, right? So you had different experiences, right? But I think all of this is going to happen to smartphones as well. You're going to have people that want to differentiate. You're going to people that have some, you know, different offerings. But in terms of MediaTek, I think important thing is to be able to supply the technology to enable our partners to develop all of this. Right? So let's talk about foldable phones. It's very important for us to have the display technology or let's say the camera technology to have two pictures into one frame. Or even a scalable big frame, right? Or picture in picture. So this is the technology that we have to bring in to enable our partners to have these differentiated products. Right. And of course, you're talking about the 5G, that's essential, the power saving is essential, all of that is also essential. Yeah. But it's just we have to be more innovative all the time to offer new solutions. Correct. And when it's come to foldable phone, so multitasking will also play a key role. Correct. So our next question is related to gaming. So can you please tell us about how MediaTek Hyper Engine is enhancing the gaming experience on a smartphone? Yeah, we've invested a lot of resources into enhancing the gaming experience, right? So if you look at Hyper Engine, it's actually got different offerings. It's got picture enhancement for one, right? And then it has light tracing, so different resolutions, auto correcting it under the different light, okay, light surroundings. Then of course you have a lot of AI into it, predicting where your next move is, and before that happens, you already have the clear vision on screen. So Hypervision is all about this, but essentially it's AI generated, it's the CPU capability, it's also our GPU capabilities, and on top of this Hyper Engine, our third-party customers or our end customers, like the brands or let's say the game developers, they can use Hyper Engine to enhance the gaming capabilities. We again offer a platform to enhance the gaming experience to the end users. So this is Mr. Daniel from MediaTek who told us about how Hyper Engine is enhancing the gaming experience on an smartphone. Hope all your doubts have been cleared now. Thank you, Mr. Daniel, for joining us. Thank you so much. MediaTek बूथ पे है। एक्चुअली यहाँ बहुत सारे बूथ थे IMC 2023 में, बट MediaTek अपना एक बेसिक वो है, क्योंकि इंटेल और MediaTek प्रोसेसर्स में बेसिकली डील करते हैं, और हम जो स्मार्टफोन आजकल यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें मोस्टली MediaTek ही निकल करके आ रहा है। और जैसा कि हम पहले के टाइम में देख रहे थे कि स्नैपड्रैगन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, बट आज के टाइम में MediaTek एक अच्छी क्वालिटी के चिपसेट्स लेकर के आ रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी यहाँ पे कि बहुत सारे डिवाइसेस जो हम डेली यूज़ करते हैं वो या फिर हमारी लाइफ का पार्ट हैं, वो MediaTek पावर्ड हैं। MediaTek के चिपसेट उनमें यूज़ किया जा रहा है। इनफैक्ट पेटीएम साउंड बॉक्स में भी MediaTek का चिपसेट यूज़ किया गया है। बहुत सारी वॉचेस हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट गैजेट लगा वो पेटीएम साउंड बॉक्स लगा, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है ऑफलाइन में पेटीएम साउंड बॉक्स एक काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल नीड बन गया है हर एक रिटेलर के लिए, हर एक शॉपकीपर के लिए। सो यहाँ पे सब्ज़ी वाले से लेकर यहाँ पे मॉल्स तक यहाँ पे पेटीएम साउंड बॉक्स यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ पे MediaTek ने उसको चिपसेट प्रोवाइड किया है पेटीएम साउंड बॉक्स में। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। एंड यहाँ पे मी एज अ सेलर, सो वी ऑल्सो रन अ स्टोर, सो हम भी पेटीएम साउंड बॉक्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली फेवरेट डिवाइस तो मेरा एक IQ का डिवाइस था, बट
मेरे लिए पर्सनली मोटो H40 है, क्योंकि वो मैं पर्सनली खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें भी MediaTek Dimensity 8020 प्रोसेसर जो है वो यूज़ हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी मेरे को वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। आई थिंक मैंने कार देखी थी वहाँ पे, उसका एक्सपीरियंस मेरे को एकदम नेक्स्ट लेवल लगा जो उन्होंने मेरे को बताया। उसमें काफ़ी कमाल के फीचर्स थे, फ्यूचरिस्टिक था। डिवाइसेस तो चलते रहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है इस इवेंट में आकर के कि MediaTek जो है ना वो ऑटोमोटिव सेक्टर में आने वाला है, जो कि एक काफ़ी कमाल की इंटरेस्टिंग चीज़ रहने वाली है। तो मैं उसके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप कहीं शॉप पे जाते हो, कुछ पेमेंट करते हो UPI के थ्रू, तो वहाँ पे जो पेटीएम बॉक्स लगा होता है, वहाँ पे आवाज़ आती है ना कि रिसीव्ड 300 रुपीज़ 500 रुपीज़, तो वो जो बॉक्स है वो भी MediaTek पावर्ड ही है। MediaTek आई एम श्योर कि काफ़ी सारी चीज़ें लाने वाले, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने ऑटोमेशन में भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई हैं। अभी के लिए स्मार्टफोन्स में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर मुझे लगता है ये ऑटोमोबाइल ब्रांड्स के साथ भी काफ़ी कोलैब करने वाले हैं। तो दोस्तों ये था MediaTek आपके लिए डायरेक्टली फ्रॉम द IMC 23, जहां पर आपने जाना कि कैसे MediaTek ना केवल 5G सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लेकर आने वाला है, बल्कि पावर कर रहा है स्मार्टफोन से लेकर TWS से लेकर EVs तक को भी। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। मैं हूं शिवम चौधरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।